Hello friends, how are you? I hope you are great. Welcome back to the English journey with Kuldeep. My name is Kuldeep and I am learning English like you. I am not perfect but I am trying every day. So guys, today we will learn how to talk about your daily routine in English. So if you are beginner, practice these sentences every day to improve your fluency. So let's start. स्टेप वन स्टार्ट विद मॉर्निंग रूटीन लाइक मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। आई वेकअप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। मैं एक्सरसाइज करता हूँ। आई डू एक्सरसाइज। मैं दांत साफ करता हूँ और अपना चेहरा धोता हूँ। आई ब्रश माई टीथ एंड वॉश माई फेस। मैं नहाता हूँ और तैयार हो जाता हूँ। आई टेक अ बाथ एंड गेट रेडी। मैं नाश्ता करता हूँ। आई हैव माई ब्रेकफास्ट। स्टेप टू टॉक अबाउट योर वर्क और स्कूल। मैं काम पर जाता हूँ या मैं स्कूल जाता हूँ। आई गो टू माई वर्क और आई गो टू स्कूल। मैं वहाँ 9 बजे तक पहुँचता हूँ। आई रीच देयर बाय 9 o'clock। मैं वहाँ काम करता हूँ या मैं क्लास अटेंड करता हूँ। आई डू माई वर्क देयर और अटेंड माई क्लास। मैं दोपहर 1 बजे लंच करता हूँ। आई हैव माई लंच एट 1 o'clock। स्टेप थ्री टॉक अबाउट योर इवनिंग रूटीन लाइक मैं शाम को घर वापस आता हूँ। आई कैम बैक होम इन द इवनिंग। मैं थोड़ा आराम करता हूँ। आई टेक सम रेस्ट। मैं टीवी देखता हूँ या मोबाइल चलाता हूँ। आई वॉच टीवी और स्क्रॉल माई फोन। कभी कभी मैं टहलने जाता हूँ। समटाइम आई गो फॉर अ वॉक। स्टेप फोर नाइट टाइम रूटीन। मैं अपने परिवार के साथ खाना खाता हूँ। आई हैव डिनर विद माई फैमिली। मैं अपने परिवार के साथ बातचीत करता हूँ एंड समय बिताता हूँ। आई टॉक टू माई फैमिली एंड स्पेंड टाइम टुगेदर। मैं 10 बजे सोने चला जाता हूँ। आई गो टू बेड एट 10 o'clock। So guys, if I talk about my daily routine, so my daily routine is I wake up at 6 o'clock in the morning. I do exercise. I brush my teeth and wash my face. And then I go downstairs to take tea. Then I take tea and come back to my room. I read some books and for 2 hours. Then I go home to have food. After having food, I came back my room and watch YouTube videos related to English speaking practice. Then I take a rest for 1 hour to 2 hours. Then I wake up and again start reading books and start watching YouTube videos. Then I teach children's. Then I go to field. Then I go to field to cut the grass. I spend there about 30 minutes. Then I came back to home. Then I come back home and cut grass with machine. After 1 to 2 hours, I take my dinner and came back to my room. Again, I read some books and watched some videos and watch some videos. Then I come back to my room and again start some watching YouTube videos and reading books. I go to bed at 11 o'clock. So friends, this is how to talk about your daily routine in English. So practice these sentences every day to improve your fluency. You will improve definitely. So guys, if you found this video helpful, please like and subscribe to my channel. See you next video.